Congress is now seeking the intervention of External Affairs Minister S.Jaishankar with regards to the international students' attack that took place in Gujarat. International students were attacked over offering namaz in a university in Ahmedabad. And now Congress has written a letter to the External Affairs Minister seeking his intervention in this case. The Gujarat Home Minister has chaired a crucial meeting. The police at the moment is interrogating the students who stay in the adjoining rooms. An investigation is underway. My colleague Ashutosh is now joining me on the story. Ashutosh, the Congress now knocking on the doors of the External Affairs Minister saying that this is a very serious attack and it should be looked into and his intervention is needed because foreign students are involved. Absolutely, because it is involvement of foreign nationals and the way they have been attacked. Clearly, this requires the attention from the highest authority, and that's exactly why the NSUI has written a letter to Foreign Minister. While we see some actions are being seen that Gujarat government, state police are being taken, but clearly the kind of incident that unfolded and those videos are doing around, so clearly that also shows certain lapses on the part of the administration and the police as well. And clearly, why it is taking so much time, why it is being delayed. Even the FIRs talks about 25 unknown people. So clearly on that, and when it comes to involvement of foreign nationals, those who are studying here, and then during this holy time of Ramzan, the way this attack has taken place. So this is also raising a serious question on the Gujarat government, Gujarat police and the local administration. But for now, the NSUI has written a letter taking intervention of foreign minister that at least there will be more and more and probably prompt a response from the state administration when the union government intervenes. Thank you, Ashutosh, for giving us all those details. The Congress now knocking on the doors of the External Affairs Minister, seeking his intervention in this case coming in from Gujarat. In this case, unidentified assailants attacked foreign students at a Gujarat university. And this took place over allegedly offering of namaz prayers being done by the foreign students inside the hostel premises. The attackers vandalized the hostel room and then resorted to sloganeering and throwing stones. A few of the students have been injured in this attack. The injured have now been admitted to a hospital. The police have in fact launched an investigation in this incident. Gujarat Home Minister is also chairing a high-level meeting to discuss the attack on the students. Meanwhile, AIMIM chief Asaduddin Owaisi has launched a scathing attack at the ruling Bharatiya Janata Party government over the attack. He is now questioning Home Minister Amit Shah to intervene and to send a strong message against the attack. He also said that these kind of attacks are only damaging India's international reputation. हम लोग इधर तरावे पर आता 10:30 बजे तक आसपास हो जाएगा, तो एक बार 3 लोग आया, वो बोला इधर का क्या मसला चल रहा है, वो हम लोग बोला नमाज पढ़ रहा है। वो एक बार दूसरा 15 लोग आया, आपको कौन अलाउ दिया ये गुजरात यूनिवर्सिटी इधर को नमाज पढ़ेंगे। वो हम लोग को बोला ये तो रूल है, क्योंकि इधर का फॉरेनर लोग ज़्यादा है और मस्जिद भी बहुत दूर है, तो इसलिए हम लोग इधर नमाज पढ़ाते हैं। तो एक बार वो 200 बहुत लोग ज़्यादा होगा, हम लोग को वो स्टूडेंट की मारा था, तो हम लोग लड़ाई ज़्यादा होगा, हम लोग रूम से अंदर आया, वो लोग जो उसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था, इसे ये वाला चीज़ से मेरा रूम को वो हमारा सबके फ्रेंड का रूम टूट गया था, वो रूम के अंदर आ गया, और ये है अभी रूम का तबीयत अभी हाल ऐसा है। मैं बाहर से हूँ, बट अभी 10:30 बजे मेरा कॉल आया था कि आपका रूम से अटैक हो जाएगा। मैं अंदर आ गया, देख रहा हूँ कि सब चीज़ टूट गया। मैं पूछना है कि मतलब क्या होगा, मसला क्या है। वो बोला है कि ये लोग आएगा, इधर कुछ पॉलिटिकल है, कुछ पार्टी कुछ है, ये आएगा, बोला है कि इधर नमाज मत पढ़े मत कर। बट हम लोग कन्फ्यूज ऐसा आ रहा है कि मतलब हम लोग भी स्टूडेंट है, इधर कुछ ना पॉलिटिकल पार्टी ना कुछ दूसरा है, ऐसा अटैक करना है ये भी अच्छा है। मैं नहीं उधर, अगर हो मर हो भी गया, 4 बंदे भी इंजरी लगेगा, वो भी हॉस्पिटल अभी है, वो कुछ नाइफ भी यूज़ करना है, वो बेचारा भी नाइफ भी मारना है। और भी इधर एक कंट्री वाला नहीं है, इधर भी 30 कंट्री से ज़्यादा लोग हैं। बट मेरा ऐसे पूछना है कि मतलब सेफ्टी हम तो चाहिए, अभी नुकसान भी आएगा, सब टूट हो गया, मेरा भी लैपटॉप भी चुरी गया, सब लेना है। अभी मेरा ऐसा क्वेश्चन भी है गवर्नमेंट से भी थोड़ा पूछना है कि मतलब अगर गुजरात भी सेफ नहीं फॉरेन से, पहले से प्लीज़ वीज़ा मत दे दो, उसमें बोल के मत लेना है इधर। क्या अगर ऐसा चल रहा है, बहुत डिफिकल्ट है। अब तो लोग कैसा देख, ऐसा कौन करना है।
यहाँ कायदा व्यवस्था की जो स्थिति है पूर्ण अंडर कंट्रोल है। किसी को कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो छोटा मोटा ये इंसिडेंट्स के नाम पे, कॉमनल के नाम पे कुछ ऐसा करते हैं। पुलिस पहले भी कड़क कार्रवाई करती रही है और आगे भी कड़क कार्रवाई करती रही है। माननीय गृह मंत्री जी के साथ भी बैठक हुई है और स्पष्ट सूचना है कि इसमें कड़क कार्रवाई हो, न्यायिक कार्रवाई पुलिस करे। यूनिवर्सिटी की तरफ से रात को ही FIR करा दी गई है और सरकार श्री ने भी और पुलिस ने भी, माननीय कमिश्नर साहब ने भी बहुत गंभीरता से इस पूरे मुद्दे को लिया है और यूनिवर्सिटी भी बहुत अर्जेंसी से इस पूरे वाकये को देख रही है और हम निश्चित ही हमें भी जो एक्शन लेने हैं, जो कार्रवाई करनी है, हम करें। दुख की बात तो ये है कि जब सब घटना बन रही थी उन्होंने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई तो पुलिस की हाजिरी में भी ये जो असामाजिक तत्व जो थे वो उन पर हमला कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको पकड़ने के बजाय उनको वहां से जाने दिया। ये बहुत बड़ी दुख की घटना है। हमारी मांग है कि ऐसे जो दोषी पुलिस कर्मचारी जो वहां मौजूद थे, जिन्होंने अपनी कानूनी फर्ज नहीं निभाई, उनके सामने सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और उनको सस्पेंड करना चाहिए। My colleague Atul Tiwari is joining me from Ahmedabad on the story. अतुल, काफी बड़ा मामला ये हो चुका है इस समय। हमें जो समझ में आता है वो ये है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है अपने उस पे। होम मिनिस्टर जो है राज्य के, उन्होंने भी एक मीटिंग बुलाई है, तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन से कुछ भी पता चला है? इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो ACP समेत क्राइम ब्रांच की जो टीम है उसकी रचना भी की गई है। गृह मंत्री ने जिस प्रकार से सुबह बैठक की है उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो जो अभी तक सूत्रों के माध्यम से जानकारी लगभग 1 से 2 लोगों को पकड़ा भी गया है और कुछ ही समय में पुलिस इन दोनों लोगों को मीडिया के समक्ष ला भी सकती है। और इसके अलावा जिस प्रकार से 20 से 25 लोगों के खिलाफ रायोटिंग का केस जो है वो दर्ज किया गया है, जिसको लेकर पुलिस फिलहाल तहकीकात में जुटी हुई है। इसलिए लगभग 4 से 5 बजे तक पुलिस जो भी इस पूरे हमले में जिम्मेदार लोग हैं उनको लेकर सामने आ सकती है। लेकिन जिस प्रकार से एक वीडियो सामने भी आया है जिसमें सामने की तरफ से जब नमाज रोके जाने की बात शुरू हुई तब सामने की तरफ से नमाज अदा जो लोग कर रहे थे उसी में से एक अफगानी जो विद्यार्थी था वही उठकर सामने तमाचा मारने सामने आया। तब कहीं ना कहीं ये मामला पेचीदा भी बन रहा है कि सिर्फ नमाज रोक। That was my colleague Atul who was giving us the details about the case. At the moment, the investigations are underway and it seems like there are 2 to 3 culprits that the investigative agencies have zeroed in on. We are now moving to the national capital where trouble is now increasing for Arvind Kejriwal just ahead of the big elections. The Enforcement Directorate has sent 2 summons to Delhi Chief Minister. One with regards to the excise policy case, for which he is supposed to appear on the 21st of March, and this is the 9th summon that has been given by the Enforcement Directorate to Arvind Kejriwal. The other summon has been sent with regards to the Delhi Jal Board case. The probe agency has asked Arvind Kejriwal to appear for questioning in the excise policy case on 21st of March and in the Delhi Jal Board case on the 18th of March. Atishi, however, has slammed the Bharatiya Janata Party over the fresh summons and has alleged that the party's only motive is to send summons to Arvind Kejriwal to arrest him. Atishi also said that nobody knows what the scam actually is, what the Delhi Jal Board case is all about. She called ED and CBI people who are working on behalf of Prime Minister Narendra Modi. The Delhi Jal Board case is in fact linked to alleged embezzlement of close to 20 crore rupees, and this took place between 2012 and 2019. अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट जाते हैं, कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, कोर्ट उन्हें बेल देती है और समन लीगल है कि नहीं है उसको एग्जामिन करना शुरू करती है, लेकिन मोदी जी उसका वेट नहीं कर सकते हैं। मोदी जी इंतजार नहीं कर सकते हैं कि कोर्ट अपना फैसला देगी। उन्होंने शाम को ही अरविंद केजरीवाल जी को 2 और समन भिजवा दिए। ये क्या है? ये कैसी गुंडागर्दी है? आज के दिन पे ईडी और सीबीआई मोदी जी के दोनों गुंडे बन के रह गए हैं। जो जल बोर्ड का केस है आतिशी जी, अगर आपको नहीं पता तो हम आपको ज्ञान दे देते हैं। ये वही केस है जो अरविंद केजरीवाल जी चला चला के बुलाया करते थे, मेरे पास इतने कागज पड़े हैं शीला जी के, इतने कागज पड़े हैं। वो कागजों वाला ही केस है मैडम। लालू जैसे चारा खा गया था, अरविंद केजरीवाल दिल्ली का पानी पी गया।
वो एक मुख्यमंत्री था जो जानवरों का चारा खा गया था। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है जो इंसानों का पानी पी गया। और आतिशी जी कहते हैं हमें पता ही नहीं घोटाला क्या हुआ है। लग जाएगा पता जब ईडी के सामने, सीबीआई के सामने पेश होना होगा और जब करोड़ों रुपए के तुम्हारे कागज तुम्हारे सामने रखे जाएंगे तो तुम्हें तो क्या, तुम्हारे बड़ों को भी इस घोटाले का पता चल जाएगा। हम बार बार एक ही बात कहते रहे हैं कि अगर दिल्ली में घोटाला हुआ है और एक नहीं लगातार फहरिस्त लंबी है, आम आदमी पार्टी का पूरा चरित्र उन घोटालों में निर्वस्त्र हुआ है। सबने देखा है कि किस तरह से दिल्ली को लूटने की कोशिश की गई है। अगर आपने शराब नीति में घोटाला नहीं किया तो आप जांच से भाग क्यों रहे हैं? इस बात का जवाब अरविंद केजरीवाल दें। अब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता भी मान चुकी है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और लोग हैरान इसलिए हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी, पदाधिकारी भी आज पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ये एक नया केस देख रहा हूं कि जल बोर्ड का जो घोटाला है, लगभग 55,000 करोड़ का घोटाला है, उसमें भी अरविंद केजरीवाल को नोटिस दिया गया है और उसका जवाब देने के लिए फिर वो भाग रहे हैं। हम अभी भी उनसे कहेंगे कि जल्दी अपनी 5 करोड़ की गाड़ियों पे बैठिए, जल्दी अपने राजमहल से निकलिए और जल्दी जाकर के ईडी को बताइए कि भैया मैंने बहुत लूटा है मोटा माल, अब जो सजा हो हमको दो, और नहीं बेगुनाह हो तो उसकी बेगुनाही का सबूत दे दो। It's very unfortunate that this kind of vindictive politics has taken over India, and it's very unfortunate because that's not what a free democracy is, and that's not why our forefathers fought the British. But unfortunately, if you see India today, the way agencies are used against people is very, very disappointing. Another high-profile arrest has been made in the Delhi liquor gate scam. BRS chief's daughter, K. Kavita, has now been arrested by the Enforcement Directorate. She was produced before the Rouse Avenue Court in the national capital. The court has now remanded her 7 days ED custody. Kavita, in fact, is now saying that her arrest is illegal. She also said that this case is fabricated. She will now be looking at fighting the case legally. Former Telangana Chief Minister K. Chandrasekhar Rao's daughter K. Kavita is produced in a Delhi court on Saturday after her arrest from Hyderabad in the liquor scam case. The BRS MLC called the arrest by the Enforcement Directorate illegal. The court has now remanded K. Kavita to 7-day ED custody. Ma'am, do you want something? Ma'am, do you want to illegal arrest? It's a fabricated case. They want to fight it out. Kavita's lawyers argued in court that there is a Supreme Court hold on coercive action till March 19. The ED has claimed the Supreme Court restriction on arrest was only for 10 days last September. The agency told the court that they have gathered enough evidence against Kavita and that some kickbacks were tracked based on statements from key accused in the case. The Enforcement Directorate also told the court that there was destruction of evidence in the case. The Supreme Court has posted Kavita's plea against the summons for hearing on March 19. In Hyderabad, BRS workers protested against Kavita's arrest. The arrest is unlawful when the matter is in Supreme Court. Coming to Hyderabad and arresting her just before the election schedule being out looks highly political motivated. We hope that the matter would be resolved immediately. The Congress too has accused the BJP of using central agencies against the opposition. मोदी जी पहले से ऐसा कर रहे हैं कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीसी और सीबीआई, ये लोगों को सबको लेके डरा डरा के इस देश में 420 people he changed. The BRS has denied any wrongdoing by its leader. It claims the BJP-led central government is misusing central agencies to get a backdoor entry into Telangana. Bureau Report, India Today.
Moving now to the state of West Bengal, where there is another provocative statement that has come from a TMC leader. TMC candidate and former IPS officer Prasun Bandyopadhyay has made a scathing statement. He actually can be seen warning the central forces and even the Election Commission. He intimidated the paramilitary forces and the BSF. He said, and I quote, "I am telling this to all the BSF people and to all the paramilitary to stay within the law." He also made a remark against the Election Commission, saying officers from the Election Commission should just be kept seated within school premises. Now, following Prasun Bandyopadhyay's statement, Amit Malviya, BJP IT chief, hit out at Prasun. He targeted the West Bengal police, saying, and I quote, "He exemplifies all that is wrong with the police in the state of West Bengal." Now, if you remember, earlier former TMC leader Sheikh Shah Jahan's aides also had targeted the Enforcement Directorate and attacked them during the Sandesh Khali probe. এ তো বিএসএফ প্যারামিলিটারি সবাইকে শুধু একটাই কথা বলছে, আপনি আইনের মধ্যে থাকুন, আমরাও আইনের মধ্যে আছি, নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হোক, ফ্রি ফেয়ার হোক। প্যারামিলিটারি যদি ভয় দেখায়, আমার নাম প্রসূন ব্যানার্জি, मैं हूं না। দেখুন না, নির্বাচন সদনকে বসে রাখতে হবে এখানে, এই স্কুলেই ভালো করে জল টল মা বোনেরা আপনারা দিয়ে দেবেন, ওদেরকে কোনো অযত্ন করবেন না, ওরাও চাকরি টাকরি করে, কোনো যত্ন করবেন না, শুধু বলবেন প্রসূন ব্যানার্জি খেলতে এসছে। বুটের দপদপানি AK-47 SLR দিয়ে কিছু লাভ নেই, ডাকছি ঢুকবে আধ ঘন্টার মধ্যে, বুঝে নেবে, সব গ্রেনেড বুঝে নেবে, আইন কানুন অবজারভার বুঝে নেবে। My colleague Ritik is now joining me on the story. Ritik, in the state of West Bengal, it definitely will be a clash of the titans, BJP on one side, the TMC on the other side. But it seems like these kind of statements are just the beginning. Definitely, Aishwarya. At a time when Election Commission is eyeing to a peaceful conduct of election in the state of West Bengal, in order to that, a record number of central forces are being deployed for the state itself during this upcoming parliament election. And Prasun Banerjee, one of the prime candidates of the ruling Trinamool Congress party, who has been nominated from North Malda seat, while time and again we can see that he is addressing, while he is addressing his voter or his partymen, provocating such speech. And this time he went on record stating and intimating the Election Commission and of course the central forces. He also suggested its partymen to that the Election Commission, officers of Election Commission should be kept in a particular place. And he also warned the central forces that they need to stay inside within the law. So such provocative statements that are coming from a candidate of a party, it's triggering raw. And we see that the BJP has heated against, but it would be interesting to see that what exactly the party's top brass are yet to react on this, and what they have to say about such statement. Back to you. The State of War 2024 has now officially begun. The Election Commission on Saturday announced the dates for the Battle of 2024. Elections will be held in 7 phases from the 19th of April till the 1st of June. The counting will take place on the 4th of June. The 7-phase election, in fact, has now triggered a big political uproar. Opposition is now alleging that Election Commission is holding elections in 7 phases only to give enough time to Prime Minister Narendra Modi to move around the city and to campaign. The Grand Old Party said that putting the nation's work on hold for such a long time is not a good idea. The TMC on the other side said that the 7-phase polling in the state once again will help parties with deeper pockets. The Sharad Pawar faction of the NCP is questioning Election Commission's decision, asking why are elections being held in 5 phases in the state of Maharashtra. How the country will progress, because election code of conduct, people will not move, material will not be supplied, budget will not be spent. According to me, it's not good. He could have completed within 3 or 4 this thing. So it was easy for people also to get their businesses completed, the infrastructure, everything. It should have helped. But anyway, Modi is Modi. Now the schedule has been announced. 7 phases.
longer the period of campaign and elections always goes to the advantage of the political party in power. That is where the Election Commission should see all the political parties have level playing field. उत्तराखंड में सभी तैयारियां पूरी हैं और जो भी चुनाव आयोग जिस प्रकार से भी चुनाव को कराना चाहता है उसमें उत्तराखंड सरकार ने पूरी तरह से तैयारी की है। हमारे उत्तराखंड से हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत लगाव है, इसलिए उत्तराखंड से 5 लोकसभा की सीटें हैं, 5 की 5 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। Now, something is brewing in the state of Telangana. Revanth Reddy and Asaduddin Owaisi's bonhomie is speaking in Hyderabad. Telangana Chief Minister Revanth Reddy and AIMIM Chief Asaduddin Owaisi shared a stage together at an iftar party. With just a few days left for the Lok Sabha elections, is the Congress and AIMIM looking at an alliance? Countdown to the Lok Sabha election has begun. Alliances are locked and loaded. NDA and India Bloc are ready for a fist fight. But the battle to include more regional parties in their fold isn't over yet. In a rare display of camaraderie, Telangana Chief Minister Revanth Reddy and AIMIM Chief Asaduddin Owaisi met at an iftar party in Hyderabad on Friday. From breaking the day's fast to wearing skull caps, both displayed good chemistry, indicating a probable Congress-AIMIM handshake for the general elections. तेलंगाना में हम फिस्ताई ताकतों को और नफरत फैलाने वालों को, हम तमाम को मिलकर इन तमाम नफरत पैदा करने वालों को, घरों को तोड़ने वालों को हमको मिलकर तेलंगाना को मजबूत रखना है, उसकी हिफाजत करना है। अमित शाह जी ने ये कह रहा है कि The Chief Minister assured the minority leader that his party will continue to protect the interests of all communities. मैं साफ अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस के अड्डा है। 4% रिजर्वेशन निकालने का हिम्मत ना नरेंद्र मोदी जी से या नहीं है तो अमित शाह जी से नहीं हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में अच्छा वकीलों को लगा के हम लड़के 4% रिजर्वेशन दिया हुआ है कांग्रेस पार्टी ने। The bonhomie between Reddy and Owaisi raised eyebrows among political circles as the AIMIM had backed K. Chandrasekhar Rao's PRS in the recent assembly elections. Prime Minister Narendra Modi is leading the BJP charge in Telangana, where the party had emerged as the party number 2 in 2019 Lok Sabha polls in terms of seat share. अब की बार Modi, in his public meeting on Saturday, lashed out at both the Congress and the BRS. कांग्रेस और बीआरएस ने मिलकर तेलंगाना के विकास के हर सपने को चकनाचूर कर दिया है। और अब तो मुश्किल ये है कि यहां कांग्रेस के पंजे का कब्जा हो गया है। पहले बीआरएस की महालूट और अब कांग्रेस की बुरी नजर। कांग्रेस के लिए तो पूरा राज्य तबाह करने के लिए 5 साल भी बहुत है। Will the Congress join hands with the AIMIM in Telangana remains a suspense. Incidentally, the Grand Old Party had been accusing Owaisi and Chandrasekhar Rao of being BJP's B team. Bureau Report, India Today. And with that, it's a wrap on this bulletin. Thank you for watching India Today. For more news and updates, you can log on to indiatoday.in. You can even download the app. This is me, Aishwarya Paliwal, signing off.